Hello and welcome to Knowledgist. If you are preparing for promotions this year in any public sector bank or IDBI, then we have a dedicated batch for you. A proven content with dedicated MCQs for your exam preparation based on the IBPS patterns so that you don't miss the chance for the selection. This course comes with the last minute ready reckoner. That means the MCQs that only requires revision at the last minute. Apart from that, you have RBI circular gist, you have all the classes contents from risk management to credit management, from forex to treasury. Everything is available in your application. Video classes, notes, whatever you want to read, you can study with a dedicated path and focused content for your promotion exam preparation. Along with that, we also have interview guidance when you selected in the written exam. Up to scale 6 level content is added in your application, so go and watch it out. Thank you. So hello and welcome to the class. So welcome to the session in whatever batch you are. It's a combined session because Basel comes in every exam. Basel is the backbone. Why I choose to start with Basel norms class? Because it is very factual. So many questions come from Basel norms because Basel norms include so many things. RWA, CRAR. These are equally important for your interview point of view. So let's discuss Basel norms. What is Basel norms? Basel is a city in Switzerland. If you have been to Basel, if you are choosing to go to Switzerland, if you go to any other city via plane, the ticket costs are always higher. So those who travel worldwide, they prefer to go to Basel, then they choose other destinations. So in terms of travel, Basel is also an important city. In terms of banking, it is the hub of the central banking, uh, global banking system. Okay. I think you are aware of SWIFT norms, everything. So in Basel, there is a Basel Committee on Banking Supervision under the BIS, Bank of International Settlement, which is headquartered in Basel, Switzerland. तो बेसल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बेसल के बिना बैकबोन के जो बैंक बनेगा वही बन जाएंगे. ठीक है. दे विल सीम लाइक इनवर्टिब्रेट्स, राइट. मतलब इनवर्टिब्रेट्स मीन्स दिस एनिमल्स दोज हु डोंट हैव एन स्पाइन. ठीक है. तो वाई बेसल कि in 1987-89 it was increasingly felt without stricter liquidity norms, without stricter supervision norms, without stricter disclosure norms, many banks are going to get failed. In long run the public money will get eroded. ठीक है. विदाउट एक सेंट्रल मैकेनिज्म के बगैर बहुत सारे जो बैंक्स हैं दुनिया में वो फेल होते जा रहे हैं और धीरे धीरे फेल हो जाएंगे. कोई बैंक नहीं बचेगा क्योंकि पब्लिक मनी है. उसको लोन देंगे तो लोन डूबेगा, तो चीजें दिन ब दिन खराब होता जाएगा. सो इट वाज थॉट, द मैनेजमेंट हैज थॉट, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ बैंकर्स हैज थॉट कि एक ग्लोबल नॉर्म्स ऐसा बनाया जाए ताकि बैंक फेल ना हो. तो एक बैंक के फेल होने से क्या दिक्कत है? एट द टाइम ऑफ इन 80s ग्लोबलाइजेशन वाज टेकिंग इट्स पेस. ग्लोबलाइजेशन बहुत जोर शोर से चल रहा था. तो जब एक बैंक फेल होता है, उसके ड्यूज दूसरे बैंक पर है, दूसरे बैंकों में उसके लेटर ऑफ क्रेडिट के ड्यूज होंगे. ठीक है. तो बाकी बैंक्स भी धीरे धीरे अफेक्ट होंगे, राइट. Why they came with Basel 3 norms? Because Basel 1 and Basel 2 were not adequate enough. Basel 3 भी sufficient नहीं था 2014 में. In 2024 it was increasingly felt that Basel 3 is not sufficient enough to safeguard the banks. So they came out with new norm, that is liquidity norms, reintroduced in 2014, that is the NSFR and LCR, liquidity coverage ratio, for resilient banking system. Normally they ask you in interview why Basel, because due to unforeseen conditions many banks tend to fail. So for a resilient banking system, Basel norms got introduced. This is the right answer. Hope you people are understanding. I am going to take your comments in between, so please hold. पहले टीचर को बोलने दीजिए जो वो बोलना चाहता है.
तो बेसल कमिटी, BCBS was established in 1974 with G10 member countries. Their reserve bank heads, their central bank heads were the part of it, and it was governed by the group of governors and heads of supervision GOS, right? So Basel Accord 1988, minimum ratio of capital to risk weighted assets, मतलब 1988 में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इंपॉर्टेंस दिया गया। 2004 में जब बेसल 2 आया उसमें सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनहांस एम्फासिस दिया गया, ठीक है। एंड इन 2010 लिक्विडिटी नॉर्म्स को, लिक्विडिटी बफर्स को एडिशनली इंट्रोड्यूस किया गया। दीज आर दी व्हाट यू से chronicle of Basel norms. Okay, let's discuss about the 3 pillars of Basel. First, point 1, minimum capital requirement. In order to survive, banks need a minimum capital at any point of time. Even if there is a run on bank, there are many loans getting defaulted, still you should have a minimum capital adequacy ratio, minimum capital, ठीक है। मान लीजिए आप FD करते हैं, ठीक है, आप FD वगैरह में रखते हैं। Sometimes you tend to invest in stock markets. You saw a market opportunity, you invested all of your money into share market, and then share market crashed. What will happen to all your savings, all your dreams, all your child's education, all your future plans? Everything will get scattered. So if you have adequate sum, if you have adequate amount of FD, you will never bother, right? समझ रहे हैं कैपिटल की कितना इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आप आज सोमवार आपने ज्वाइन किया होगा बैंक, 3 दिन का लंबा छुट्टी था। आफ्टर दैट एवरीबॉडी गॉट स्कोल्डेड बाय देयर बॉस, क्योंकि उनको लगता है कि छुट्टी वो अपने हाथ से देते हैं। तो किसी ना किसी को तो आज इंसल्ट किया ही होगा, बहुत सारे लोग आज इंसल्ट हुए होंगे। क्या है, छुट्टी में चले गए आप लोग, काम कुछ नहीं हुआ है, टारगेट अचीव नहीं हुआ है, मंथ एंड आने वाला है, आप लोग छुट्टी का मजा लेते हो, काम नहीं करते। ये सब आज कॉन कॉल बहुत हुआ होगा। In by 11 or 12 o'clock, all of you would have thought of quitting this job, but then you would have reminded so many EMI dues, house rents, marriage, child's education, so many burdens you have, and you don't have adequate capital. If you would have no loans and great amount of FD, great amount of saving, what you would have done, you would have thrown out the paper and started preparing with Knowledgist कि मैं बैंकिंग लैटरल एंट्री में चला जाऊंगा, मेरे पास तो सिलेक्शन है, मेरे पास नॉलेजिस्ट है, डरने की कोई बात नहीं है। ओनली बिकॉज यू डोंट हैव कैपिटल, you have to go through all that trauma today, right? So minimum capital is something like that. Even if there are trauma situations for the bank, even if there are illiquid situations, there is no scope for the banks to survive, then banks tap on their reserves and they go on doing the business. Then comes the supervisory review process. What is supervisory review process? Means when banks are listed in stock markets, the supervisors like Reserve Bank of India, SEBI, the NSE, the BSE want them to disclose sufficient data to the stock market so that nobody gets bullied, nobody gets wronged, nobody gets मिसइंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो कॉन्क्रीट सुपरवाइजर रिव्यू से क्या होता है कि आरबीआई के बहुत सारे नॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे आपके दक्ष पोर्टल है, फिटर पोर्टल है, जो भी आप बिजनेस करेंगे अपने सुपरवाइजर को बताएंगे। सुपरवाइजर्स आर अपॉइंटेड सो दैट you don't mislead to the market. Then comes the market discipline. You don't manipulate your stocks, you don't manipulate your income, you don't hide your provisioning, you don't hide your NPAs so that someday your entire portfolio will get burst, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी, फर्स्ट थिंग, सफिशिएंट कैपिटल होगा तो आदमी किसी को नहीं डरेगा। यू विल नेवर केयर व्हाट योर बॉस सेज, यू विल, आप बैंक में अच्छे काम करेंगे, अच्छे दिन सर्वाइव करेंगे, आप तो सुनेंगे ही नहीं। जो किसी की बात नहीं सुनेगा उसको कौन निकालेगा, उसका मुंह कौन लगेगा। सो सिमिलरली इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, you will never care one or two people, one or two corporates even gone bankrupt or defaulted on your loans. If you are filing the supervisory reviews or if you are filing all your compliance in a due term, you don't care anyone. If you are following the market discipline, disclosing everything to the stock market, you even don't care, right? So ये है आपके 3 pillars, ठीक है।
पहले देखते हैं व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. Capital adequacy ratio means having sufficient capital in layman's term. So the formula is capital means the tier 1 and tier 2 capital divided by the risk weighted assets. ठीक है. So in order to understand this formula, we have to understand what is risk weighted asset. What is risk weighted assets? I am coming to that. Before that, CAR versus CRAR. Many times people get confused. Both are similar terms. CAR is in layman's term. That means capital adequacy ratio. CRAR is capital to risk weighted asset ratio. CAR is a general term. मतलब किसी भी बिजनेस के लिए जितना कैपिटल सफिशिएंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट होता है उसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं. मींस माय एक्सपोजर, माय लायबिलिटीज आर 2 crores but I have 1 crore of capital. So my capital adequacy ratio is 50%. That is in general term. But in banking, this capital adequacy ratio is not always against the liabilities of the bank. It is against the bank's risk weighted assets. So in terms of bank, capital adequacy ratio is always stated as CRAR. Hope you people are understanding it. ठीक है. मतलब मेरे लिए क्या होता है, मेरे लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब जितना मुझे लोगों को देना है, जितना मेरा लायबिलिटीज है. मान लीजिए मेरा लायबिलिटी 2 करोड़ का है, 2 करोड़ का लोन है और 1 करोड़ का सेविंग है. ठीक है. कल के डेट में मेरा नौकरी चला जाए, मैं बैंकरप्ट हो जाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूं? अपना 1 करोड़ के लोन को लेकर, 1 करोड़ के सेविंग्स को उठाकर 2 करोड़ के लोन को क्लोज करने की कोशिश करूंगा, फिर भी क्लोज नहीं होगा. तो मेरे जितने ओब्लिगेशंस हैं उसके अगेंस्ट में मेरा कैपिटल कितना है? 1 करोड़. मतलब 50% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आई हैव. इफ टुडे एवरीथिंग शॉट्स डाउन, if I want to close everything, I still can't close. I can only close my 50% obligation. That is my capital adequacy ratio. But बैंक के अगेंस्ट में क्या होता है? बैंक सीधा सीधा अपने ओब्लिगेशन को कैलकुलेट नहीं करता है. द बैंक नेवर कैलकुलेट्स इट्स ओब्लिगेशंस डायरेक्टली. What they calculate? They calculate the risk associated to its obligation. ठीक है. क्या रिस्क है मैं आपको बताता हूँ. रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो बताता हूँ. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेजर्स बैंक्स अवेलेबल कैपिटल. इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ बैंक्स रिस्क वेटेड एसेट्स. सो व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट्स? मैं पहले उसमें आता हूँ, फिर आपको टियर 1 टियर 2 कैपिटल समझाऊंगा. ईच एसेट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बैंक इज हैविंग सम रिस्क. ठीक है. मैं बैंक में एफडी रखता हूं, उसमें भी रिस्क है क्योंकि बैंक डूब सकता है. ओनली 5 लाख इज सेव्ड बिकॉज DICGC guarantees up to 5 lakh. If I have a 10 lakh of FD in bank, in a particular bank, then 5 lakh of it is in risk क्योंकि 5 लाख डूब सकता है. अगर बैंक डूब जाए तो डूब सकता है. चंदा कोचर ने ब्राइब ले लिया, क्या पता कि कल किसी दूसरे बैंक के फाउंडर्स और चेयरपर्सन ब्राइब ले जाए. जैसे ES बैंक में राणा कपूर ने कर लिया, अपना ही बैंक था, खुद ने डुबा दिया. तो समथिंग कैन हैपन बिकॉज इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, बट इट इज सेफर देन stock market exposure. So if I have 100 rupees in stock market and 100 rupees in FD, so I will always assume my 100 rupees is at complete risk and my 100 rupees FD is having 50% risk, right? So what is my total risk weighted assets? 150. How? Because I am assuming that my 100 rupees in share market can become zero some other day, right? And my 100 rupees of FD at any bad situation can become up 50 rupees because rest 50 is saved by DICGC, right? So when I calculate my capital adequacy ratio, I will not calculate my total obligation. I will calculate how much of obligation is at risk. I will calculate that. Getting my point? तो बैंक में जो बैंक का जो एसेट है, मतलब बैंक का जो लोन है, रिटर्न आना है बैंक के पास. बैंक के जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक के पास रिटर्न आना है. हो सकता है कि वो रिटर्न ना आए, इसीलिए दैट अमाउंट इज इन रिस्क. सो दैट एंटायर व्हेन दैट एंटायर अमाउंट इज इन रिस्क, आई हैव टू अरेंज दैट मच ऑफ कैपिटल टू सेफगार्ड दैट एसेट. ठीक है. तो इसीलिए बेसेल कहता है कि व्हेन योर 100 रुपी इज एट रिस्क, you have to have 11.5 rupee as your capital. Getting my point, dear?
The definition of RWA represents that asset of a bank weighted by its credit risk, market risk and operational risk as outlined by Basel guidelines. So कुछ amount डूब सकते हैं as per the market fluctuation, as per the credit risk. What is the risk in credit? The risk in credit is called the counterparty risk or the default risk, or the frontline person or with whom you are making an agreement of due return of the loan can go rogue, कैन गो बैंकक्रप्ट, कैन डिफॉल्ट। तो इसीलिए बैंक के जितने भी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी लोन है, जितने भी एसेट हैं, उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट रिस्क में होता है। तो किसका कितना अमाउंट रिस्क में होता है मैं आपको बताता हूं। अगर कैश है हाथ में, जीरो रिस्क। अगर सीजीटीएमएसी गारंटेड है, जीरो रिस्क। इफ it is guaranteed by if it is in balance with Reserve Bank of India, no risk. Loan against FD and LIC bond, 0% risk. Okay, you don't have to have any capital for that. Government approved securities, you should have 2.5% capital requirement for that. That means if you want to invest 100 rupee in government security, that means 2.5 rupees कैन बी गॉन बैंकक्रप्ट, मतलब आपके पास रिटर्न नहीं आएगा, डिफॉल्ट हो सकता है या फिर डिलेड पेमेंट हो सकता है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा 100 रुपए अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया तो 97.5 रुपीज आपको मिलेगा। बाकी 2.5 रुपीज हो सकता है कि गवर्नमेंट के किसी नियम के कारण आपका कॉन्फिस्केट हो जाए। ठीक है, तो रिस्क वेटेड एसेट है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 2.5। बैलेंस विद बैंक्स अदर देन आरबीआई एंड दोज बैंक्स हु मेंटेन 9% CRAR और स्टाफ लोन्स हैव 20% रिस्क वेट। हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, guaranteed loan guaranteed by ECGC have 50% guarantee, 50% is at risk. Okay, housing loan above 75%, retail loan up to 5 crore, 75% risk. Forex loan to PSU, commercial real estate, educational loan, 100% risk. Consumer credit, personal loan, capital market exposure, 125% risk. Credit card and investment in venture capital, 150% of risk.